welcome to class 1 computers. Children, this is your computer book IT Planet, my bits and bytes, computer series 1. Children, in our yesterday's video we were doing chapter 5, that is turning on a computer and turning off a computer. So children, we had completed the chapter and we were doing book exercise. So let us start with the book exercise, and we had done some of the book exercise in our previous video. Firstly, we will revise those exercises and then we will proceed further in the book exercise of chapter 5. So let us start, children. So children, yesterday we were doing self-evaluation. After completing the chapter, after learning how to switch on a computer and how to switch off a computer, now we were doing self-evaluation. So children, let us revise self-evaluation. These are some points which we have learned from the chapter, and let us read and tell whether we agree with the statement or not. So children, after reading the chapter, I know that these points I have learnt from the chapter. After reading the chapter, I know these points. I know that to turn on or off a computer, we should follow step-by-step procedure. So children, we understood from the chapter that अगर हमें कंप्यूटर को ऑन करना है या ऑफ करना है तो हम डायरेक्टली नहीं करेंगे, बल्कि हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर से हम कंप्यूटर को ऑन और ऑफ करेंगे. Then second step, I know that we should turn off a computer properly after finishing the work. Children, हमारा काम जैसे ही कंप्यूटर का ख़त्म हो जाएगा, हमें अपने कंप्यूटर को properly ऑफ करना है. So children, we have properly ऑफ करने का मतलब है we will go step by step procedure. We will go by step by step procedure. मतलब step by step procedure से हम कंप्यूटर को ऑफ करेंगे. So children, I fully know that computer should not be turned off directly. So after completing the chapter, we have also understood that we should not turn off the computer directly. हमें computer को directly बंद नहीं करना है. So children, these are the points which we have understood from the chapter, and we agree with all the 3 points. That I have understood that to turn on or off a computer, we should follow step-by-step procedure. Then we should turn off a computer properly after finishing the work, and then I fully agree that the computer should not be turned off directly. Computer को कभी भी directly बंद नहीं करना है. So these are the points which we have understood from the chapter. Now children, here are some book exercises. Now we are going to do these book exercises. Our first question is tick the correct answer. So children, here we have some questions, and along the questions we have some options also. So we will tick on the correct option. बच्चों, हमारा पहला क्वेश्चन है टिक द करेक्ट आंसर. इसमें हमारे पास 3 क्वेश्चंस है और हर क्वेश्चन के साथ 3-3 ऑप्शन है. तो हम यहाँ पे इन क्वेश्चन में दिए गए ऑप्शन में जो भी सही है उसके आगे सही का निशान लगाएंगे. तो चलिए हम पहले इसे पूरा करते हैं. तो हमारा पहला क्वेश्चन है कंप्यूटर इज़ अ डैश मेड मशीन. कंप्यूटर इज़ अ डैश मेड मशीन. सो चिल्ड्रन, एज वी नो हियर देर आर 3 ऑप्शंस, मैन, God and animal. So as we know, computer is made by man, so you will put a tick in front of man. So correct answer is man. Computer is made by man, that is why it is also known as man made machine. बच्चों, हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि कंप्यूटर मैन ने बनाया है, इसलिए हम उसे मैन मेड मशीन कहते हैं. और यहाँ हम मैन लिखेंगे और मैन के आगे टिक करेंगे. After that children, second question is dash desktop appears after typing the password. So children, हमको जब वेलकम विंडो मिलता है वहाँ पे हम पासवर्ड टाइप करते हैं तो वी गेट अनदर विंडो. दैट विंडो इज कॉल्ड विंडो डेस्कटॉप. सो हियर यू विल राइट विंडो. Option 3, window is the correct answer. Here we have 3 options, turn off, welcome or windows. Correct answer is windows. So you will put a tick in front of windows. So children, we have done second one also. Computer should be turned dash after completing any work. So children, as we know, after completing the work, computer should be turned
off. तो here you will write off. आप यहाँ लिखोगे off. Off के सामने टिक का निशान लगाओगे. So children, the 3 questions here are: computer is a man-made machine. Window desktop appears after typing the password. Computer should be turned off after completing any work. Computer should be turned off after completing any work. So these are the 3 questions, children. Now let us do question number B. Now in question number B, children, match the pictures of column A with the step for turning on the computer in column B. One has been done for you. So children, here all the steps are for turning on the computer. The steps which we follow while turning on the computer are given in 2 columns. In one column, all the steps are given in the form of picture, and in second column all the steps are given in written form. तो children, यहाँ पे 2 कॉलम हमारे पास है और जितने भी स्टेप यहाँ दिए गए हैं, 6 स्टेप्स दिए गए हैं. These steps are for switching on the computer. These are the processes how we follow step by step method to switch on a computer. तो इन कॉलम ए में हमें पिक्चर के थ्रू दिया गया है और कॉलम बी में उन पिक्चर्स का नाम दिया गया है. सो वॉट एवर वी फॉलो इज गिवन इन कॉलम बी इन द टेक्स्ट फॉर्म. सो लेट अस मैच दीज the steps in column A with steps in column B. Now first one is done for you, children. As you can see in column A, step 1 we have the picture of switchboard. स्विच बोर्ड का पिक्चर है जिसमें हमने कंप्यूटर को प्लग इन किया हुआ है और जो उसके बगल में स्विच है उसको ऑन किया है. तो हियर यू विल मैच दिस विथ F. टर्न ऑन द पावर स्विच फ्रॉम द बोर्ड. टर्न ऑन द पावर स्विच फ्रॉम द बोर्ड. नाउ सेकेंड वन, चिल्ड्रन, स्टेप 2. स्टेप 2 में वी हैव पिक्चर ऑफ यू हैव पिक्चर ऑफ यहाँ पे हमारे पास यूपीएस का पिक्चर है. इस यूपीएस के पिक्चर को यू विल मैच विथ स्विच ऑन टर्न ऑन यूपीएस. तो हियर इन डी में वी हैव टर्न ऑन यूपीएस. यू विल मैच यूपीएस विथ टर्न ऑन यूपीएस. उसके बाद हमारे पास वी हैव पिक्चर ऑफ, हियर वी हैव पिक्चर ऑफ सीपीयू. थर्ड में वी हैव पिक्चर ऑफ सीपीयू. सो हियर यू विल मैच सीपीयू विथ first option that is switch on CPU. थर्ड में हमारे पास CPU का पिक्चर है एंड यू विल मैच इन कॉलम A with column B with A, option A, that is switch on CPU. Third step is switch on CPU. Then we have step 4. Step 4 में we have monitor. तो switch on monitor. C पे you will match switch on monitor. Then step 5 we have welcome screen. Step 5 में we have picture of welcome screen, and in column B we have B, option B is welcome screen. So you will match this with welcome screen. Now last one, step 6 is, children, desktop screen. So you will match this with desktop screen, that is E. So children, we have completed this. First picture is of a switchboard. सबसे पहला पिक्चर switchboard का है. Switchboard, firstly we will turn on the power switch from the switchboard. So it is already done for you. Second one is the picture of UPS. You will join with D, turn on UPS. Then third step में you have CPU, switch on CPU. फोर्थ पिक्चर में मॉनिटर, स्विच ऑन मॉनिटर. फिफ्थ पिक्चर में वी हैव विंडो स्क्रीन, स्विच ऑन विंडो स्क्रीन. लास्ट पिक्चर वी हैव डेस्कटॉप स्क्रीन. सो चिल्ड्रन, यू ऑल very well know all the 6 steps how to switch on a computer. Now I hope you have understood. Our next question is, children, complete the steps to turn off the computer. Now we have the steps to turn off the computer. So children, as we know, while turning off the computer we follow several steps. First step is click on, here we have blank, you are going to write here start.
So firstly we click on the start button. So you will write here START, start. Click on start button. Click on shut down button, SHUT, shut, DOWN, down button. Click on shut down button. Switch off the monitor. Then third step is switch off the monitor, TOR, monitor. Switch off the monitor power button. Then switch off the UPS button. And at last, children, switch off the main power, MAINPOWER, main power. So children, these are the 5 steps to switch off the computer. First is click on start button. Second is click on shut down button. Switch off the monitor. Switch off the UPS and switch off the main power button. These are the 5 steps which we should always follow to switch off the computer. So children, we have completed this also. Now our next step is D. Children, D is write T for true and F for false statement. So here some statements are given. We are going to read out the statement and tell whether the statement is true or false. So children, UPS stands for uninterrupted power supply. UPS stands for uninterrupted power supply. So children, this statement is right. So you will write here T for true. आप यहाँ true लिखोगे. उसके बाद computers can work without electricity. Computers can work without electricity. So जो computer है, can it work without electricity? No children. As we know, computer works only when electricity is, power supply is given to it. So it cannot work without electricity. So here you will write F for false. Can we can switch off the computer directly. So children, can we switch off the computer? Yeah, should we switch off the computer directly? We can switch off the computer directly, but we should not. हमें नहीं करना चाहिए. इसलिए here you will write F for false. We can switch off the computer directly is false. We should not switch on the computer directly. So these are the true, false. Let us revise. UPS stands for uninterrupted power supply. UPS stands for uninterrupted power supply. Computers can work without electricity. Computers can work without electricity. We can switch off the computer directly. So these are the first one is true statement and remaining two are false statement. So children, we have done this also. Now children, here we have application based question. As we know, every time we have one or the other application based question in every chapter. So here also we have application based question. By now you very well know that these are the questions which make you apply your knowledge into your day to day life. तो हमने जो भी चैप्टर से सीखा है, जो भी समझा है, उसे हम यहाँ अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करेंगे. तो यहाँ वी हैव डे टू डे लाइफ सिचुएशन. यहाँ पे हमारे डेली लाइफ सिचुएशन से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है. लेट अस रीड दिस स्टेटमेंट्स एंड ट्राई टू सॉल्व द स्टेटमेंट. आस्था tried to switch on a computer after turning on the main power, then UPS, CPU and monitor. She was not able to do any work on it and help her to open the desktop and start working. So children, Astha tried to switch on a computer after turning on the power, UPS, CPU and monitor. She was not able to do any work on it. Help her to open the desktop and start working. So children, that means till monitor she has done. After that she is not able to open the desktop. So as we have learnt this chapter from the we have learnt how to start a computer from the chapter. So I hope you also have understood and know how to switch on the computer from the desktop.
So you will help her in starting the computer from the desktop. तो आप डेस्कटॉप ओपन करना सिखाओगे, आपका मॉनिटर उसने ऑन कर लिया है, मॉनिटर ऑन करने के बाद यू विल हैव वेलकम विंडो स्क्रीन, फ्रॉम देयर यू विल टेल हर टू टाइप पासवर्ड and then after typing password she will click on the go arrow key, from go arrow key she will reach desktop, वहाँ से हमें एक और विंडो अपीयर होगा that is desktop window. From desktop window you will tell her how to start any work. So you will click on start button, from start button you will have a menu, from menu whatever she wants to do she can do. So in this way children you will use your knowledge what you have understood from the chapter in helping Astha in opening the computer. Now children, lab activity. In the computer lab, when we go to the computer lab, that time we will see how to switch on and off a computer, but as we are not able to go now, it is not possible for us to do this. So children, we have completed chapter 5. Now today we are going to start our next chapter, that is keyboard. So children, we have studied the chapter, we were revising chapter 5. Now today we are going to revise chapter 6, that is keyboard. So children, before starting keyboard, what is the purpose of keyboard? So children, as we know, the purpose of the keyboard is to गिव इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर. हम कीबोर्ड से कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं. कंप्यूटर इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर एंड विदाउट कंप्यूटर इट इज़ विदाउट कीबोर्ड इट इज़ इम्पॉसिबल टू वर्क ऑन कंप्यूटर. सो चिल्ड्रन by now we have understood how to turn on and turn off a computer. Now after learning how to turn on and turn off a computer, we can do any kind of work or whatever we want to do on computer we can do. So children, in order to do any work on computer we need a keyboard. Before doing any work on the computer, let us understand what is keyboard and what all we can have on the keyboard. So children, you can see the picture of keyboard here. This is the picture of keyboard. It is a colorful keyboard children, and by seeing itself we can understand that there are different types of keys present on the keyboard. So what are these keys? These are the small buttons which are present on the keyboard. जितने भी यहाँ पे छोटे छोटे हमको बटन्स दिखाई दे रहे हैं, छोटे बड़े, इनको हम कीज़ कहते हैं. इन छोटे छोटे बटन्स को हम कीज़ कहते हैं. इसमें कुछ बटन्स छोटे हैं और कुछ बड़े हैं. बट चिल्ड्रन, एज यू कैन सी दीज आर शोन बाय डिफरेंट कलर्स. वाई दीज आर शोन बाय डिफरेंट कलर्स? क्योंकि दीज आर ऑफ डिफरेंट टाइप. जो भी कीबोर्ड में बटन्स हैं ये अलग अलग तरह के बटन्स हैं, इनका अलग अलग काम है. इसीलिए इनको हमारे बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, इन ऑर्डर टू मेक अस अंडरस्टैंड इन बेटर वे, these keys are given with different colors. So let us see children. You can see black colored button. सबसे ऊपर टॉप पे you can see 12 black colored buttons. So children, these black color buttons are function key. हम इन्हें function key कहते हैं and these start from F1 to F12. 12 buttons हैं, इनको हम F1 से F12 तक देख सकते हैं. So children, each of these buttons have their own work or the task, and below black buttons children you can see there are red colors button. If you can count them children, these are 10 in number. ये जो red color के buttons हैं which are arranged just below the function key, these are 10 in number. So children, these are the red color button which we can see here. These are 10 in number. So हम यहाँ पे देख सकते हैं ये ऊपर वाला these black keys are function keys. इसे हम function key कहते हैं. FUNCTION function key, KEY key. ये function keys हैं and they start from F1 to F12. These start from F1 to F12. Okay. Now other than these children we have some more keys. You can see here we have some keys. For example, we have red colored keys. These red color keys children, these are number keys. These are just below the function key and these are just below these blue colored key. These red colored keys are number keys.
MBER, number, KEYS, keys, number keys. These are number keys. These start from 1 to 10. These are 1 to 10. These start from 1 to 9 and 0. The number keys are from 1 to 9 and 0. Using these number keys, we can do any kind of calculation, and we can write any number starting from 0 to अनलिमिटेड और इन्फिनिटिव, अंत 0 से लेके हम अनगिनत नंबर्स लिख सकते हैं इन्हीं 10 नंबरों को यूज़ करके। इसमें हमारे पास सबसे पहले 1 to 9 नंबर्स है, उसके बाद 10 नंबर है और 0 नंबर है, इन सबको मिला करके 10 नंबर्स है। सो चिल्ड्रन, यू कैन सी वन मोर सेट ऑफ रेड keys present on the keyboard. ये भी red color के की है. Why both the keys are of red color? Because these two keys are of the same time. This one is also number key and this one is also number key. Both are number key. ये दोनों ही number keys हैं, इसलिए दोनों red color से show हो रहे हैं. So children, these are called number keys and these are called numeric keypad. इसको हम numeric keypad कहते हैं. इसके अंदर here we have option of on off also. यहाँ पे हमारे पास एक की है जिस पे लिखा हुआ है num lock. अगर हम num lock को ऑन करेंगे तो ये की these keys will work. अगर if you keep it off तो ये काम नहीं करेगा. तो इस की में हमारे पास ऑप्शन है कि हम इसे ऑन और ऑफ भी कर सकते हैं. सो दीज टू टाइप्स ऑफ कीज आर shown with red color because both are same, both are number keys. First one, this one is known as number keys, whereas this one is known as numeric keypad. हम दोनों जगह से एक ही काम कर सकते, एक ही तरह का काम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी 1 to 9 नंबर है प्लस 0 है और यहाँ पे भी 1 to 9 नंबर और 0 है. So you can say children, नंबर कीज आर प्रेजेंट ट्वाइस ऑन द कीबोर्ड. जो नंबर की होता है वो कीबोर्ड में 2 टाइम्स प्रेजेंट होता है. देन चिल्ड्रन, बिलो नंबर कीज वी हैव ब्लू कलर्ड कीज. ये जो आपको ब्लू कलर के कीज दिखाई दे रहे हैं, these are alphabet keys. So children, alphabet keys are also very important for us because whatever we write on the computer is text. जो भी हम लिखते हैं it is डन बाय द अल्फ़ाबेट की ओनली. हमको जो भी लिखने का काम करना है, हमें कोई भी डॉक्यूमेंट बनाना है, कोई भी फाइल बनाना है, मैसेज करना है, तो वी यूज़ अल्फ़ाबेट कीज़. अल्फ़ाबेट कीज़ हैव 26 letters. Alphabet keys have 26 letters. Using these 26 letters, we can write anything on the computer. And children, it starts from A to Z. ये 26 नंबर में होते हैं. These are 26 in number and they start from A to Z. But they are not arranged in a प्रॉपर सीक्वेंस. A to Z वाले सीक्वेंस में ये अरेंज नहीं है, ये ऊपर नीचे आगे पीछे अरेंज है, इनका कोई सीक्वेंस नहीं है. बट ऑल द 26 लेटर्स आर प्रेजेंट ऑन द कीबोर्ड एंड दीज कीज आर शोन विथ ब्लू कलर. यहाँ पे हियर दीज कीज आर शोन बाय ब्लू कलर. चिल्ड्रन, हर कीबोर्ड में हमको कलरफुल नहीं होता. हियर दीज कीज आर गिवन विथ कलर्स and given made colorful so that you can understand these keys properly. अब यहाँ पे देख के ही हमें समझ में आ रहा है कि बहुत अलग अलग तरह के कीज़ हैं यहाँ पे. So mainly we are reading about 3 types of key in the chapter, that is number keys, alphabet keys and some special keys. Now children, we have understood about number keys and alphabet keys. Now we are going to understand about some special keys. अब special keys क्या है? Other than blue red colored keys, children, you can see some of the green colored keys. All these keys are some special keys. इनको हम special keys कहते हैं. क्यों हम इनको special कहते हैं? क्योंकि these help us in doing any work or task on the computer. For example, children, if you are typing something on a computer and you want to delete, you will use backspace key. तो सबसे पहले आप कर्सर को ले जा करके जिसको भी डिलीट करना है उसके बाद में उसके बगल में ले जा करके स्टैंड कराओगे. यू विल प्लेस द कर्सर टू द लेफ्ट ऑफ एनी वर्ड और द लेटर यू वांट टू इरेज. और फिर उसके बाद एक बार हम बैक स्पेस की, यहाँ पे यू कैन सी दिस ग्रीन कलर्ड की, यू कैन सी हियर द ग्रीन कलर्ड की, दिस वन इज बैक स्पेस. इसको हम बैक स्पेस कहते हैं, BACKSPACE. As it erases
लेटर्स, ये एक बार में एक लेटर इरेज करता है. एज इट इरेजेस लेटर इन दिस डायरेक्शन, लेफ्ट डायरेक्शन में, ये लेफ्ट डायरेक्शन में लेटर को इरेज करता है. कर्सर यहाँ पे है, कर्सर यहाँ पे है, तो इसके पहले वाले लेटर को, इसके पहले जो भी हमने लेटर लिखा है, अगर हमने यहाँ पे ए लिखा है तो ए को ये इरेज करेगा. अगर हम इसको यहाँ पे बैक स्पेस को प्रेस करते हैं तो ये जो कर्सर है, दिस इज कर्सर, इसको हम कर्सर बोलते हैं. कर्सर के लेफ्ट हैंड साइड में जो लेटर है ए लिखा हुआ है उसको वो इरेज करता है. सो चिल्ड्रन, बैक स्पेस इज यूज्ड अगर हमसे कोई गलती हो जाए, हमको इरेज करना है. जब भी हम कुछ लिखते हैं तो गलती तो होना ही है, हम कुछ ना कुछ गलती तो करते हैं. तो अगर उस लेटर को हमको इरेज करना है तो हम उसको उसके राइट साइड में, लेटर के राइट साइड में या वर्ड के, यस ऑफ कोर्स लेटर के राइट साइड में हम कर्सर को प्लेस करेंगे. उसके बाद बैक स्पेस को प्रेस करके हम उसको इरेज कर सकते हैं. सो दिस इज़ द वर्क ऑफ बैक स्पेस की. आफ्टर दैट चिल्ड्रन वी हैव अनदर की. दिस की इज़ कॉल्ड एंटर की. अब एंटर की भी हमारे पास दो बार होता है. एक एंटर की ये है और दूसरा एंटर की यहाँ पे है. अल्फा ये न्यूमेरिक कीपैड में है. सो चिल्ड्रन दीज टू, सो वी कैन से कि एंटर कीज आर ऑल्सो प्रेजेंट ट्वाइस ऑन द कीबोर्ड. एंटर की जो होता है वो भी हमारे कीबोर्ड में 2 टाइम्स प्रेजेंट होता है. एंड द एंटर की इज़ यूज्ड टू मूव टू द नेक्स्ट लाइन. इफ़ सपोज यू आर राइटिंग समथिंग ऑन द कीबोर्ड, आप कुछ भी कीबोर्ड पे लिख रहे हो और आपको क्या करना है, आपको वहाँ से नेक्स्ट लाइन में आना है, तो यहाँ पे हम किस की का यूज़ करेंगे, एंटर की का यूज़ करेंगे. सो एंटर की हेल्प्स अस to move from one line to another or move to next line. So children, it is also known as return key. हम enter key को return key भी कहते हैं. So children, enter key is also known as return key. So this is enter key. Now children, there is another key which is used for erasing the text. You can see here children, this is delete key. This is also given with green color. It also comes under special key. So if you want to erase something or delete something, there are two keys. एक backspace के बारे में we have already discussed and another key is the delete key. But they delete the word in opposite डायरेक्शन. सो बैक स्पेस को अगर हमें करना है तो वो लेफ्ट टुवर्ड्स, कर्सर के लेफ्ट साइड के लेटर को इरेज करेगा. लेकिन डिलीट की करना है तो कर्सर के राइट हैंड साइड के लेटर को वो इरेज करेगा. सो ये इट वर्क्स इन दिस डायरेक्शन. राइट साइड के वर्ड को डिलीट करेगा, डिलीट की ये वाला की, और यहाँ पे अगर कोई लेटर है तो हम इसे बैक स्पेस से डिलीट करेंगे. सो these two work in opposite direction. One erases the letter towards left of the cursor, that is backspace key, and the other erases the letter towards the right of the cursor. So these two are the keys which are used to erase the letter or the character. One erases towards the left and other erases towards the right of the cursor. देन चिल्ड्रन दिस वन इज़ शिफ्ट की. ये शिफ्ट की है. शिफ्ट की के साथ हम, जैसे कि यहाँ पे हमारे नंबर की में चिल्ड्रन, इफ़ यू कैन सी यू हैव वन मोर ऑप्शन अलॉन्ग विद द नंबर विच दीज ऑप्शंस आर कॉल्ड सिम्बल्स. अगर हमें सिम्बल्स जो कि नंबर की के साथ दिए हुए हैं उनको यूज़ करना है तो वी विल प्रेस दीज नंबर कीज अलॉन्ग विद द शिफ्ट. तो हमें ऊपर वाला जो ऑप्शन है, नंबर के ऊपर जो ऑप्शन दिया गया है, उस ऑप्शन को हम यूज़ करके कर सकते हैं, ऊपर के सिंबल्स को यूज़ कर सकते हैं. तो हियर शिफ्ट कीज आर यूज्ड अलॉन्ग विद द अदर कीज टू गेट सम any option. Now children, after this we have one more key, this. Here we have another key which is the लार्जेस्ट की प्रेजेंट ऑन द कीबोर्ड. जैसा कि आप देख रहे हो, सबसे लंबी की जो कीबोर्ड में है उसको हम स्पेस बार की कहते हैं. एंड चिल्ड्रन दिस की इज़ यूज टू गिव स्पेस बिटवीन टू लेटर्स और द वर्ड. अगर हमें कभी किसी लेटर के बीच में स्पेस देना है तब हम इसको यूज़ करते हैं, या जब भी हम लिखते हैं तो हम वर्ड्स के बीच में भी स्पेस देते हैं, देयर ऑल्सो वी यूज़ इट. So space bar key is the longest key present on the keyboard and this key is used to give space between the words or the letters. So children, then we have one more key. Another key present here is caps lock key. So children, caps lock key is used for
कैप्स लॉक की को यूज़ करके हम कैपिटल और स्मॉल टेक्स्ट को कैपिटल और स्मॉल लेटर में लिख सकते हैं. सो कैप्स लॉक की इज़ यूज्ड टू write text in capital or small letter. Then here also we have shift key. Shift key is used along with other keys to use the symbol present with नंबर. नंबर के साथ हमारे पास नंबर की में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं. ऊपर वाले ऑप्शन को यूज़ करने के लिए हम उसको इन नंबर कीज़ को शिफ्ट के साथ दबाते हैं, और अगर हमें नीचे के नंबर्स को यूज़ करना है तो हम डायरेक्टली इसको दबाते हैं. सो दीज आर द सम स्पेशल कीज़ विच आर प्रेजेंट ऑन द keyboard. So children, this is all for today's video. Go through the chapter, whatever we have learnt today, revise it and meet again in the next video. Till then, thank you.